India. Now, what is agriculture? We studied about agriculture. Agriculture is the rearing of the animals and the growing of the food crop, which is basically our backbone of a country, because it provides a lot of employment to people in India. It provides 90% of our food and beverage requirement, the bulk of our clothing fiber, and large amount of food material. What are the factors that influence the agriculture? Agricultural activities, they vary all over the world because of difference in climate, environmental conditions, soil rainfall, etc. Some of the factors that influence agriculture are the relief features. अगर हम बात करें क्रॉप्स की, क्रॉप्स हम कहाँ उगाएंगे? जो एरेबल लैंड है, जहाँ पे आप सूटेबल है कल्टीवेशन के, प्लेन्स में ज़्यादातर क्रॉप्स उगाए जाते हैं, बिकॉज जो लो लैंड्स हैं वो रिवर के पास होते हैं और वहाँ पे एरिया जो होता है वो फर्टाइल होता है, यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन होती है, तो इजीली आपको लेबर भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत हाई होता है. सो हम कहाँ पे उगाते हैं क्रॉप्स? इन प्लेन्स में. अगर हम प्लेट्यूज की बात करें, प्लेट्यूज में आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे लैंड बहुत हार्ड होता है, सॉइल बहुत थिन होती है. हिली एरियाज में जो है प्रॉब्लम होती है सॉइल इरोजन की, और इस करके हम वहाँ पे क्रॉप्स नहीं उगा सकते हैं. हाउएवर सम क्रॉप्स लाइक टी, और यहाँ पे वाटर लॉगिंग चाहिए टेरेसरेन, वहाँ पे आप टी ग्रो कर सकते हो. Now first was the relief feature. Now let's come to the climatic condition. We have discussed about the climatic condition. तो दो चीजें होते हैं क्लाइमेट की जो बहुत मैटर करते हैं, इट इज द टेम्परेचर एंड रेनफॉल. सो जर्मिनेशन जो होता है सीड्स का क्या रिक्वायर करता है? मॉडरेटली हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल. और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है हमेशा एग्रीकल्चर को फेवर करता है. कल्टिवेशन इज पॉसिबल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वेटोरियल एंड दिस ट्रॉपिकल रीजन. क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन इन द हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट विद एक्सट्रीम टेम्परेचर. तो आपको अगर क्रॉप्स उगाने हैं तो रिलेटिवली मॉडरेटली हाई टेम्परेचर रेनफॉल चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल in the areas where it is deserts, with extreme temperature. Different crops require different amounts of water. For instance, rice को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए as compared to millets. Millets तो arid area में भी उग जाते हैं. Now let's come to soil. Different type of soil is required for different type of crops. अगर हम बात करें soil का काम होता है प्लांट को मॉइस्चर देना और न्यूट्रिएंट देना. जो पोरस सॉइल होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है और इसको इजीली आप टिल भी कर सकते हो. एलिवल सॉइल जो होती है वो बहुत फर्टाइल होती है. ब्लैक सॉइल जो होती है कोर्स होती है और कॉटन के ग्रोथ के काम आती है. सो कल्टिवेशन इज नेसेसरी एंड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय वेरियस मीन्स. सो दिस इज अ मेजर फैक्टर. देन आर द इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे होंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इरिगेशन का कैसे है, चाहे वो कैनाल्स के फॉर्म में, डैम्स एंड reservoir, it improves the agriculture considerably. The available of transport, that also be. So one is your infrastructure, second is availability of transport in providing necessary infrastructure for agriculture. The seeds, fertilizer, machinery and labor which is easily available for farming contribute to a major way. Now the most important factor in improvement in farming technology by replacing primitive farming techniques by modern techniques and implements. तो मेजर क्या है कि मेजर आपके जो पुराने टेक्निक्स हैं उसको वो सब मैनुअल बेस्ड था, इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द बेटर टेक्निक्स. और गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लगाई हैं, इम्प्लीमेंट की हैं अबाउट लैंड टेन्योर, टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा विच हेल्प इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. अब हम पढ़ेंगे फार्मिंग किस किस तरह की होती है. फार्मिंग बेसिकली दो तरह की होती है, राइट? और ये डिपेंड करता है जोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर. यहाँ पे बेसिकली आप पढ़ोगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड यू विल स्टडी कमर्शियल फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग में भी हम सब पढ़ेंगे इंटेंसिव फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. वील देन स्टडी अबाउट कमर्शियल फार्मिंग इन विच विल स्टडी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. हम अगर पढ़ते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए तो आपको मिलेगा थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मॉनसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर के अंदर दो चीजें आती हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक फार्मिंग. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? ये प्रैक्टिस होता है जहाँ पे थिकली फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं, अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया. ये जो एरियाज होते हैं यहाँ पे बहुत तेज रेनफॉल आती है और यहाँ पे वेजिटेशन का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में करा किया जाता है, इसको स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. फार्मर्स क्या करते हैं, एक प्लॉट को क्लियर करते हैं, सारे पेड़ हटा देते हैं, प्लॉट को क्लियर करते हैं और उनको बर्न कर देते हैं. इसकी जो एशेज हैं दे आर मिक्स्ड विद सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, यैम, पोटैटोस एंड cassava they are grown. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear for fresh patch of land for cultivation. पहले एक पैच को क्लियर किया
उसके बाद उसमें जो है क्रॉप्स उगाए, राइट। फिर जब उसकी फर्टिलिटी चली गई तो वो दूसरे नए पैच को उन्होंने क्लियर किया और वहां चले गए। इस करके इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, बिकॉज टाइम नेचर इसको नेचर नेचुरली इसकी जो रिप्लेशन फर्टिलिटी है उसको रिप्लेनिश कर देती है। Now, land productivity in this type of cultivation is low as the farmers do not use fertilizer and other input. यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें, जो प्रोडक्टिविटी है लो है, बिकॉज वो पुराने मेथड ही यूज करते हैं। इट इज नोन एज डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिससे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में से जूमिंग कहते हैं, मिल्पा कहते हैं मैक्सिमम, और रोका कहते हैं ब्राजील में, लडांग कहते हैं और रे कहते हैं वियतनाम में, राइट। इट हैज डिफरेंट नेम्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नाउ लेट्स कम टू नोमैडिक फार्मिंग। हमने कहा कि ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस था वो दो चीज पे डिपेंड करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे और नोमैडिक हर्मिंग में। नोमैडिक हर्डिंग बेसिकली इज प्रैक्टिस इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। नोमैडिक हर्डिंग जो है क्या सिस्टम है? इट इज अ सिस्टम ऑफ रेजिंग एनिमल्स बाय अलाउइंग देम टू ग्रेज ऑन नेचुरल। अब यहाँ पे आपने बहुत सारे जानवर्स को ब्रीड कराया और बड़ा किया, बिकॉज वो किस पे डिपेंडेंट है? नेचुरली वो नेचुरल वेजिटेशन जो उग रही है उस पे डिपेंडेंट है। जो हर्डर्स हैं दे डू नॉट ग्रो एनी फॉर्डर। अब ये फॉर्डर स्पेशली ग्रो नहीं करें, ये जो जगह अवेलेबल है, जो खाना अवेलेबल है, उसी को अपने अपने एनिमल्स को छोड़ रहे हैं। दे बेसिकली सर्च फॉर पैस्चर्स एंड वाटर फॉर द एनिमल्स अलोंग विद डिफाइंड रूट्स एज दे डू नॉट हैव हाई ब्रीड ऑफ एनिमल। अब यहाँ पे जो ब्रीडिंग हो रही है वो हाई ब्रीड नहीं हो रही है, तो जो अमाउंट हो रहा है मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, वो लो है, सफिशिएंट जस्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। तो एनिमल्स जो हैं जैसे यहाँ पे शीप, गोट, कैमल्स और याक को रेस करते हैं, ब्रीड कराते हैं पीपल, दे ट्रेड स्किन, वूल एंड बोन्स फॉर एनिमल्स। Now this was about taking the limited needs. Now let's come to commercial farming. Commercial farming में हम high doses of modern inputs use करते हैं, चाहे वो chemical fertilizers हो, pesticides हो, insecticides हो, और या high yielding variety of seeds in order to get more output. तो हमारे को commercial farming में सबसे ज़्यादा benefit क्या मिलता है? Output ज़्यादा मिलता है। In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in the market. तो ये क्या क्यों किया जाता है? एनिमल्स को रेयर करते हैं कि ये बार, और क्रॉप्स को बड़ा करते हैं कि मार्केट में सेल कर पाए। The area cultivated and amount of capital invested in that. यहाँ पे commercial farming in with respect to the farming which you studied just now, here the area is bigger and larger. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. इसमें तीन चीजें आती हैं आपकी। अब हम समझते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है। In this type of farming, crops are grown for the purpose of sale in the market. Crops उगाए जाते हैं कि ये मार्केट में बेचे जा सकें, स्पेशली वीट और मेज जो है ये कमर्शियली ग्रो किए जाते हैं। मेजर एरियाज वे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस एट टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. They are thickly populated areas. Farms are extensive and spreading over hectares of land. Single crop is grown in a year because of severe winter. Then is mixed farming. Mixed farming में हम क्या करते हैं? Land is used for growing food grain, fodder crops and rearing animals. It is so land is used for multiple purpose, growing food, fodder and rearing animals. So this is practiced in Europe, Argentina, New Zealand, South Africa, USA and Southeast Australia. अगर हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करें, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज नोन एज मोनोकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर को मोनोकल्चर भी कहते हैं। इस तरह की फार्मिंग में सिर्फ एक सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं लार्ज एरिया में। दे प्लांटेशंस यूज ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ लेबरर्स। इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सारे प्लांटेशन क्रॉप्स है। टी आसाम में ग्रो करते हैं और बंगाल में, कॉफी कर्नाटका में। और ये जो प्लांटेशन स्टेट्स होते हैं ये ह्यूज होते हैं, इनका जो प्रोडक्शन होता है ये मार्केट के लिए होता है, तो वेल डेवलप्ड टेक्निक्स और ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है इनको ग्रो करने के लिए। एंड दे बेसिकली आर नियर टू द फैक्ट्रीज ऑल्सो, सो दैट द कॉस्ट इज लेस, राइट। देन द अदर मेथड ऑफ फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपने सुना होगा आजकल बाजार में ऑर्गेनिक सब्जियां मिल रही हैं। ऑर्गेनिक सब्जियों में हम पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स नहीं यूज करके ऑर्गेनिक तरीके को फार्मिंग करते हैं, सो दैट वी आर रिलीव फ्रॉम द डिजीजेस which are causing us because of the excessive use of chemicals. So modern farming has many harmful effects because of the use of pesticides and chemical fertilizers. Organic farming में आपके natural pesticides use होते हैं. Genetic modification in seed is not done to increase yield in organic farming. The yield may be not too high but it is free from chemicals. So आप लोग केमिकल से डिप्राइव
डिराइव्ड खाना खाना चाहिए हमें। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, सो आजकल अगर आप कोई बाहर जाएंगे तो आपको बोलेंगे ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में आपका पेस्टिसाइड्स केमिकल्स यूज नहीं होता है, दे आर ग्रोन ऑर्गेनिकली। देन इज रैंचिंग। रैंचिंग मतलब होता है रेजिंग ऑफ एनिमल्स फॉर सेल इन दी लार्ज फार्म्स। सो नाउ दीज फार्म्स आर कॉल्ड ranches which consist of pasture land and they are scientifically managed. देन इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब कई जगह पर जो लैंड होल्डिंग्स होती है ना वो बहुत स्मॉल होती है एंड दे कैन नॉट बी बेनिफिशियली बाय, दे कैन नॉट बेनिफिट इंडिविजुअल फार्मर्स। तो इस जगह पर सारे फार्मर्स जो होते हैं, कुछ फार्मर्स जो होते हैं कोऑपरेट करके और पूल करते हैं अपना लैंड और उसको साथ में फार्म करते हैं। जो उनका अमाउंट यील्ड होता है, जो भी उसका जो खर्चा होता है, वो सारे कोऑपरेट करके इनपुट मतलब सब कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, पूल करते हैं और उसके अलावा साइंटिफिक मेथड को भी यूज करते हैं कि हमारा बेटर यील्ड प्रोडक्शन हो। अब कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है, ये कलेक्टिव फार्मिंग आप चाइना रशिया में देखते हैं। यहाँ पर जो फार्मर्स हैं दे कलेक्टिवली दे आर द कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। द टोटल वर्क जो होता है वो डिवाइड कर लेते हैं द ग्रुप ऑफ सैलरीड वर्कर्स एंड मैनेजर सुपरवाइजेस देम। द profits are divided equally among all the people who share the property. Then we have state farming. State farming is practiced on government land. The workers are employees of the government and are paid a salary. The farms are large and they are mainly used for research purposes. This type of farming help in developing new techniques which is proved successful and are followed by other farmers in the country. Now, ये तो हमने पढ़े कौन कौन सी टेक्निक है फार्मिंग की। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन एंड हाउ डिड इट एक्चुअली हेल्प इन great production of crops. The Green Revolution was a period of which was very significant in agriculture transformation that took place in India in the middle 1960s. It was a series of initiatives aimed at increasing agriculture productivity and ensuring food security for the rapidly growing population of country. तो इसमें agriculture productivity बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत वाइटल रोल प्ले किया। उसने क्या फोकस किया, ग्रीन रेवोल्यूशन फोकस ऑन द कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, मॉडर्न इरिगेशन मेथड एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। तो इसने यहाँ पे तीन चीजों को फोकस किया। वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड। सबसे पहले हाई यील्डिंग वैरायटी जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी उसको इंट्रोड्यूस किया ग्रीन रेवोल्यूशन में। ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज हैड लिमिटेड यील्ड्स एंड वर ससेप्टेबल टू डिजीज एंड पेस्ट। कई बार ऐसा था पूरा फार्म पूरी मेहनत करता था, क्रॉप्स लगाता था और एंड में अगर एक एक जो पेस्ट है वो पूरे फार्म को डेवर कर लेता था। तो यहाँ पर ये चीज समझाई गई और साइंटिस्ट ने न्यू हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जो ज्यादा रिसिलियंट थी और उसकी ग्रोथ साइकिल कम था और हायर यील्ड देती थी। ये जो HYV सीड्स थे इसने प्रोडक्टिविटी की क्रॉप को बहुत बढ़ा दिया और ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड को मीट किया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, ये दो क्रॉप्स के लिए भी बेसिकली हमने किया गया था, दैट वाज फॉर wheat and rice. New varieties of wheat such as the semi-dwarf wheat developed by Dr. Norman and high-yielding rice varieties were introduced. These new varieties were successful in transforming the agricultural landscape and making India self-sufficient in food production. So जो Dr. Norman थे, he introduced semi-dwarf varieties of wheat and high-yield varieties of rice, which played a pivotal role in the success of ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहला तो ये HYV हो गया। फिर better irrigation. The success of green revolution depended on the sure and timely water supply. The government invested in the expansion of irrigation facilities to reduce dependence on erratic monsoon rains. Tube wells, canals, and other irrigation methods were developed to ensure a steady water supply to the farmlands. Then is the availability of water throughout the year allowed farmers to adopt multiple cropping, growing 2 or more crops in a year, increase agricultural productivity. It also provided stability to the agriculture sector, reducing the risk associated with monsoon dependent farming. तो इन लोगों ने क्या किया, अब एक से ज्यादा क्रॉप एक ही लैंड में लगाना शुरू किया जिससे उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ी थी और ग्रोथ भी बढ़ रहा था। टू मैक्सिमम क्रॉप यील्ड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्लूड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में। पर ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया उन्होंने जो है स्प्रे कराना शुरू किया बहुत सारे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे ये न्यूट्रिएंट्स दे रहे थे जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सॉइल को, जिससे उसकी प्लांट की ग्रोथ बढ़ रही थी, यील्ड बढ़ रहा था। पेस्टिसाइड कंट्रोल कर रहे थे पेस्ट और डिजीज को जो क्रॉप को डैमेज करके प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। पर इसने डेफिनेटली हेल्प तो किया बट बहुत सारे कंसर्न रेस किए एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए। जब ओवर यूज हुआ केमिकल का तो सॉइल की डिग्रेडेशन शुरू होगा, वाटर पोल्यूशन शुरू हुआ और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट बनने शुरू हो गए। Efforts to promote sustainable agriculture now emphasize the judicious use of agrochemical and adoption of organic farming practice. तो ये जो इसकी problems आई, this is now being catered to the current rule of producing crop without using chemicals or using organic farming practices.
Now, तो अगर हम बात करें chemical fertilizer and pesticide while boosting the crop yield raise concern about environmental sustainability and biodiversity. So we have studied about HYV, we have studied about irrigation facilities, we have studied about fertilizer and pesticide. Now we are studying about mechanization. Another important aspect of the green revolution was the adoption of modern agriculture machinery and technology. Mechanization is in agriculture such as tractors, harvesters, threshers reduce the need for manual labor and increase the efficiency of farming operation. ठीक है, लोगों की जॉब तो गई, बट ये बेसिकली फिजिकल लेबर जैसे इसमें बहुत टाइम लगता काम होने का, अब मशीनरी ने इंसान को रिप्लेस कर दिया और काम बहुत क्विकली और बहुत लार्ज स्केल पे होना शुरू हो गया. Farm mechanization not only eased the physical burden on farmers but also enhanced productivity. However, it also led to change in rural labor dynamics and resultant displacement of traditional labor-intensive practice. So, adoption of modern agriculture machinery not only increased efficiency but also led to changes in रूरल लेबर डायनेमिक्स, बिकॉज जो रूरल लेबर थी मैनुअली डिपेंडेंट थी काम करने के लिए, उनको शिफ्ट करना पड़ा अपना जो काम था. दे हैड टू चूज अनदर वर्क टू सस्टेन देयर लाइव्स. नाउ द इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. This was obviously good, but it had a lot of challenges. It had a lot of impact on agriculture. Let's read it. The Green Revolution brought about significant positive changes in India's agriculture, making the country self-sufficient in food production. तो फायदा क्या हुआ? सेल्फ सफिशिएंट बना दिया. इट हेल्प एलिवेट हंगर, खत्म हो गए, भूखमारी खत्म हो गई, पॉवर्टी खत्म होनी शुरू हो गई, फूड सिक्योरिटी मिलना शुरू हो गई. However, it has also had challenges like the excessive use of water for irrigation, chemical fertilizers led to ground water depletion. अब हमने पानी तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, पानी बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो डिप्लीट होना शुरू हो गया, वाटर पोल्यूशन बढ़ गया. इनडिस्क्रिमिनेट हमने यूज़ किया पेस्टिसाइड से. इससे क्या हुआ? आपके ना ऑर्गेनिज्म, आपकी जो इकोलॉजिकल साइकिल है उसको खराब हुआ और बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ. Socio-economic impact. The Green Revolution benefit land owners and farmers with increased access to HYCs, fertilizers, irrigation facilities. Small and marginal farmers face challenges in adopting modern practices due to limited resources, leading to inequalities in land distribution and economic disparities. So जो फार्मर्स स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज उनके पास एक लिमिटेड रिसोर्स बेस था, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज हुई लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी स्टार्ट हुई. फिर मोनोकल्चर जिसमें एक ही क्रॉप लगाया जाता था, तो फोकस ऑन हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज लीड टू नेग्लेक्ट ऑफ अदर. कुछ क्रॉप जो आपको बहुत फायदा देता है उनको इग्नोर करना शुरू हुआ, जिसकी वजह से क्रॉप डाइवर्सिटी कम हुई और इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू पेस्ट एंड डिजीज. बिकॉज पेस्ट जो होता है, अगर वो सिर्फ हमने 2 ही क्रॉप्स पर काम किया, रिमेनिंग क्रॉप्स को हमने इग्नोर कर दिया. Now, in conclusion, the Green Revolution was a critical phase in India's agriculture history that significantly increased food production and ensured food security for its growing population. तो food production बढ़ गया, security बढ़ गई. While it brought prosperity to many farmers, it also highlighted the importance of sustainable farming practice to address the environmental and social challenges. यहाँ कहाँ कई लोगों को तो इन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत बूस्ट दिया, बट एक प्रॉब्लम होगी एनवायरमेंट और सोशल चैलेंजेस में. As future citizens, it is essential for class 7 students to understand the impact of modern agriculture practices and the need for balanced and sustainable approach to the agriculture to preserve the environment and support the livelihoods of farming communities. So as a student, as a responsible citizen, you should understand the balance which should be maintained to maintain the fertility of the soil and to help in sustainable agriculture development. Now this is all about the chapter. Let's come to the question answers. Horticulture means cultivation of fruits and vegetables. Nomadic herding is in tropical regions. If we talk of commercial raiding of silkworm is known as sericulture. The type of farming practice in pampas regions is commercial grain farming. Northeast India में इसको झूमिंग कहते हैं. The main goal of green revolution was to increase agricultural productivity and food security. Which of this is not a component of green revolution? That is the organic farming techniques. The green revolution was based in wheat and rice. Mechanization in agriculture basically means adoption of modern technology to reduce manual labor. Now, crops are grown on arable lands. Dash are not suitable for growing crops as they consist of hard land and thin soil. Plateaus. In dash cultivation, farmers clear a plot of land by felling trees and burn them in shifting cultivation. In dash farming, crops are good for the purpose of sale in the market. Commercial farming. Plantation agriculture is also known as monoculture. The Green Revolution aimed to increase the agriculture productivity and ensure food security. High yielding varieties of sweets produce higher crops compared to the traditional crop varieties. Then the expansion of the irrigation facilities reduce dependency on monsoon rains or irrigation. Overuse of water and chemical fertilizers raise environmental impact and green revolution. Now let's come to the true and false. Shifting
cultivation is called roca in Brazil. Yes, yes, the spelling is ROCA. Extensive farming is practiced in densely populated region. No, if we compare it with intensive farming, it is not practiced in densely populated region. The Green Revolution introduced new varieties of crop that were less resistant to diseases and pests. Yes. Then mechanization in agriculture reduced the need for manual labor and increase farming efficiency. Yes. The Green Revolution only focused on the cultivation of rice and wheat in India. Yes. Then sustainable agriculture practices were not considered during the Green Revolution. True, because sorry, it is false. Sustainable, we talked of sustainable practices in Green Revolution, right? Now let us, what is agriculture? Agriculture is the practice of growing crops and raising the animals. How does climate influence agriculture? Climate plays a major role in influencing the agriculture because climate is dependent on temperature and rainfall, which are the major factors in growing the seeds. Then how does crop rotation help in soil fertility? Crop rotation help in restoring the nutrients of the soil, which helps in making the soil fertile. What is extensive agriculture? Extensive agriculture, we use a huge land and a lot of labor to do agriculture, but the output is less as compared to intensive agriculture. What is nomadic farming? Nomadic farming, the animals are the fodder is not grown specially, but the animals are left to big pastures for their fodder. Then what were the main components of Green Revolution? The main components of Green Revolution was high yielding varieties of crop, then there was the irrigation facilities, then it was great machinery and the use of pesticides and insecticides. Now, how did the expansion of irrigation facilities contribute to the success of Green Revolution? The expansion of irrigation facilities helped in bringing a lot of water to the fields, which was basically dependent only on the monsoon shower. So with the tube wells and other sources of water, Green Revolution was able to provide proper irrigation facilities for a better yield of crops. What are the some positive impacts of Green Revolution? The positive impacts of Green Revolution was the high yielding varieties of crops were produced. The crops were produced in abundance, and the technology was increased, and the farmers' life was affected positively. The challenges and the negative consequences were it affected people because of excessive use of fertilizers, pesticides. There was a degradation of the soil fertility, there was a degradation of the groundwater, and there were farmers which were not able to afford such practices, because of which their livelihood was affected. Now let's come to question number E. Describe the chief practices of dairy farming. When we do dairy farming, we take care that the animals may get proper nutrition. They are not deprived of food. They are not they don't catch any kind of diseases. They are taken care of. Their proper place is given for their survival, and they may not get diseases. So this is taken care in dairy farming. What is shifting cultivation? Shifting cultivation, a farmer takes a patch of land, grows crops, and then goes to another patch of land when then the old patch of land is not fertile for the growth of crops. Then classify agriculture on the basis of availability of land. If we talk to agriculture, we have studied the kind of agriculture on the basis of land. We have studied that if in agriculture basis of land, we have subsistence farming and commercial farming, which is further divided into intensive subsistence, primitive subsistence. And in primitive subsistence, we have studied about shifting cultivation, nomadic farming, and in commercial farming, which is basically grown when with the farmers grow scratch crops for selling in the market. We have commercial grain farming, mixed farming, and plantation agriculture. Now let's come to the next question. The next question is what is commercial agriculture? Discuss various types of commercial agriculture method. In commercial agriculture, the food crops are basically grown to be exported and to be sold in the market. So in commercial farming, we use high doses of modern inputs like chemical fertilizer, pesticide, insecticide, and high yielding variety of seeds to get more output. It is basically grown to sell in the market, and the amount of capital invested is large. In commercial farming, it includes commercial grain farming, mixed farming, and plantation agriculture. Right? Let's come to the next question. The next question is, what is plantation agriculture? If we talk of plantation agriculture, it is again a part of commercial farming. In plantation agriculture, if we talk of plantation agriculture, this is done in which one type of crop is grown.
right? And this is also in plantation agriculture, we grow only one type of crop, which is known as monoculture. A single crop is grown over a large area, and plantation use huge tracts of land using capital intensive input. And in plantation we generally use tea, coffee, rubber, sugarcane, banana. They are the plantation crops. Tea is grown in Assam and Bengal, and in Karnataka we grow coffee. Here the production is basically for market, we were selling, so well developed system for transport also plays an important role, and they are near to the factory. So this is taken care in plantation agriculture. Then it explain the concept of sustainable agriculture and discuss the importance in addressing the environmental and social challenges posed by green revolution. Provide example of sustainable practices that promote ecological balance and support to the well-being of farming community. अगर हम sustainable agriculture की बात करते हैं, then what is sustainable agriculture? Sustainable agriculture should be able to take care of the sustenance of agriculture over a period of time by balancing the nutritional need of the soil, taking care of the growth of the crops, taking care of organic production of the soil with respect to the output that is produced. So in green revolution, although we use high yielding variety of crop, we had better irrigation friendly, we had better mechanism, but it was actually disrupting the balance of the soil and nature, and there was a great ecological disbalance that was created because the soil was losing on its fertility, the groundwaters were running dry. So in sustainable farming practices, we have to take care of the production in which we grow more of nitrogen growing crops, we take care of carbon emissions, right? We take care of the land, we take care of the organic farming, we take care of the right method which may not affect our biological diversity, and it may not disrupt our ecological balance. So this is all about the chapter and the question answers. I hope we had great time learning. Happy learning.